दोस्तों किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द कंपनी थरोली एंड उसमें से एक लंबा प्रोसेस होता है टू कंप्लीटली रीड द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली आपको एक कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फिनेंशियल पोजीशन बताता है और फिनेंशियल स्टेटमेंट में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 बैलेंस शीट जो एक फिनेंशियल पोजीशन बताता है। नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट जो एक फिनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। नंबर 3 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कंपनी का फंड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो का इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 4 इज चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी जो ओनरशिप पैटर्न में कुछ अगर चेंजेस होता है तो उसका इंफॉर्मेशन देता है। एंड नंबर 5 इज नोट्स टू अकाउंट्स। मैं आने वाले वीडियो में सब डिटेल में कवर करूंगा, बट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इनकम स्टेटमेंट्स में क्या वो चेंजेस करोगे विच कैन टर्न योर इनकम स्टेटमेंट इनटू अ यूजफुल डेटा फॉर फिनेंशियल एनालिसिस। दोस्तों कोई भी कंपनी ऑपरेट क्यों करती है? नंबर 1 रीजन है टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू देयर कंज्यूमर्स एंड नंबर 2 रीजन इज टू अर्न मनी। एंड इनकम स्टेटमेंट बेसिकली आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि एक कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये मैंने पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का इनकम स्टेटमेंट लिया है। अगर आपको ऐसी वाली फीलिंग आ रही है देन वेट, इनकम में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम के डिटेल्स मिल जाएगा एंड एज फार एज एक्सपेंसेस इज कंसर्न्ड इट इज सेग्रीगेटेड इनटू 7 to 8 heads, that is cost of material consumed, purchase of stock in trade, changes in inventory, employee benefit expenses, depreciation and amortization, other expenses and finance cost. And when you reduce the total expenses from total income you'll get profit before tax, and from profit before tax when you reduce the tax expenses you'll get profit after tax. ये फॉर्मेट में सब प्लस और माइनस का खेल है। एंड में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिपोर्ट होता है विच जनरली इंक्लूड्स गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम फॉरेक्स ट्रांसैक्शंस, gains and losses from investments available for sale, gains and losses from derivatives which is used as hedging tool, and remeasurement gain or losses on defined benefit plans for employees. And it is unrealized, and the main purpose to report it separately is to reduce the volatility of net income or profit after tax. देखिए फॉर्मेट का तो आपको पता चल जाएगा जब आप 20 से 25 कंपनीज का फिनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करोगे। मेन इंटेंट टू मेक दिस वीडियो इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट आपको क्या क्या चेंजेस करना चाहिए इन द इनकम स्टेटमेंट सो दैट इट इज मोर यूजफुल फॉर यू। सबसे पहले आपको 10 साल का नंबर्स कोलेट करना पड़ेगा एंड फॉर दैट आई यूज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज। आई डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट एंड आई डोंट यूज third parties app like Screener or Money Control. There are two reasons for it. First reason, मुझे चाहिए first hand information which will give me comfort while doing the financial analysis. And for that purpose, what I do is I directly download it from the company's website. And second, मुझे चाहिए in-depth information which gives notes-wise details जो मुझे third party app से generally मिलता नहीं है। अगर आपको कोई third party app पता है which gives the notes-wise detail, then I request you to please comment down below. Once you collate the numbers for last 10 years, next step is to prepare a common size statement. ये basically numbers को percentage में convert करता है to understand the various changes which has taken place in the income statement. So अभी अगर आप Polycab का income statement देखोगे तो you will realize the following points. अगर आप 2020-21 का sales देखोगे it was 8,800 crores and 21-22 में उनका सेल्स था 12,200 crores which is 39% increase on year basis. Earnings presentation में कंपनी ने बोला है कि demand for wires and cable segment has grown a lot in the industry. So that means industry में दूसरे competitors का revenue growth भी check करना होगा to understand how their growth was as compared to the Polycab's growth. यहाँ पे और एक check आप कर सकते हो to verify the increase in receivable days. अगर receivable days increase हुआ है then you can be suspicious about the increase in revenue as well. Another jump in revenue was in FY 23-24 wherein in 22-23 revenue was 13,900 crores which has increased to 18,000 crores. That is 30% increase year on year basis. यहाँ पे भी आप similar checks कर सकते हो and you can see whether the demand for wires and cables was actually high or not. Next, if you see, employee benefit expenses has increased from 444 crores in FY23 to 586 crores in FY24, which is 130 crores more than previous year and 32% increase on year basis.
वी नीड टू चेक वाई सच इंक्रीज इन एक्सपेंस हैज टेकन प्लेस. सो उसके लिए आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा. सो व्हेन आई रेड द एनुअल रिपोर्ट आई गॉट टू नो दैट देयर हैज बीन न्यू रिक्रूटमेंट्स and also annual increments has taken place, and there are also ESOP expenses which the company has incurred in the current financial year. So एक basic चीज जो आप कर सकते हो, you can read the annual reports of previous year and you can see what are the headcounts in the previous year. So for example, in last year headcount was somewhere around 12,640 and in current year it is 15,739, which is 25% year on year increase. Other expenses is also one of the key component to be verified in the income statement. And in last 5 years, if you see, the other expenses has grown at a CAGR of 16%, which is as close as increase in revenue, that is 18%. अगर आप major expenses देखोगे in note 35, it is freight and forwarding, subcontracting expenses, power and fuel, business promotion and consumption of store and spares. इसमें आप year on year basis का comparison कर सकते हो as a percentage of sales and you can see whether there are any major deviations. Another check what you can do is, let's say for example Polycab ka freight and forwarding expenses is somewhere around 5% of total sales, and then you can verify with other competitors as well whether it is 5% or 7% or well the case may be 3% as well. अगर 3% है then you need to see why and where the Polycab is expending more on freight and forwarding. दोस्तों ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने अभी लिया है. इस वीडियो का मेन पर्पस ये था कि आपको ये दो की टेक अवेज मिले. नंबर 1, आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को कॉमन साइज स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए. सिर्फ नंबर देखने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू द कॉमन साइज स्टेटमेंट यू विल हैव एन ओवरऑल होल्ड ऑन द नंबर्स ऑफ द कंपनी. दूसरा की टेक अवे ये है कि आपको मिनिमम 7 to 10 ईयर्स का फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए to understand the trend of revenue and expenses. Doing this and then analyzing the profitability of the company will be more useful than just collating the numbers of last few years. मैंने ये एक्सेल शीट अटैच किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप भी ये एक्सेल शीट आके पढ़िए और देखिए, एंड अगर आपको कोई की पॉइंट्स मिलता है देन प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लेट्स मेक इंडिया फाइनेंशियली savvy. थैंक यू.